It's 2 more minutes. We are waiting for others to join and then we'll start. Okay, guys, let's start. Yes, Miranda, we are just starting. No, I wasn't speaking till now. We are waiting for others to join. It's 16:05 already. We waited for 5 minutes and now we'll start. I hope you guys can hear me and you guys can see my screen, right? Yes. Yes. Right. Yes, sir. Okay. So before we proceed with the next topics, Azure architecture components and Azure Active Directory, uh, any doubt do you guys have for the topics which we have covered? Anything on this infrastructure as a service, PaaS, platform as a service, software as a service, or public and private or hybrid cloud, or what is cloud, or anything related to infrastructure which we did last week? Anyone has any questions? No, sir. Okay. So before we move, as we discussed yesterday, I'll quickly have few questions based on the topics which we covered till now. Okay, we'll cover that and then we'll proceed with these topics. So could any one of you tell me what are the service models do we have in Azure? You can refer the document if you want. If you want to do it without looking at the document, that is also fine. As of now, I want you to practice answering this question. So uh, with open document, without open document, it's fine with me. So could any one of you explain what are the service models in Azure or in cloud? Yes, sir. There are three types of like service model. Mhm. Infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So in infrastructure, it's like the physical server is handled by the provider, and we just need to take care of other things. And in platform as a service, we get the operating systems on which we can create or build applications. And in software as a service, we get everything like Office 365. Sorry, you can say the Office or any application we see. So that's the three models. Perfect. Only in infrastructure, instead of servers, say infrastructure, because Okay. we have been seeing that diagram from last 2 days. When I say infrastructure, it is not only the hardware of the server. It also includes your ISP, your power supply, your networking. Many things are there at Yes. the backend. The rest answer was fine. Right. Who could tell me the dep- deployment models? Understand and remember these jargons, guys. Okay, types of model I could ask, but deployments of model is also same thing. So who could tell me the deployments of model?
Yes guys, any one of you, not necessary किसी एक को भी बोलना है, आप कोई एक बता दो, एक को explain कर दो, let someone else explain other thing. Deployment model. There are like three types, like public, private, and hybrid. In public, it's like where the hardware is shared between one or more tenants. Okay. So and in private, it's only dedicated to it's only dedicated to one company or one tenant, which provides more security. And whereas in hybrid, it's like a co-management, like what I can say, like you can use both, like on premises some and some on the cloud as well. So yeah, yeah, three types. Right. Okay, and I'm sure you know what cloud is. I don't have to ask that. Uh, Infrastructure, SaaS, PaaS. This is, I hope it is clear as of now. So we did discuss what is Azure. It is a cloud provider owned by Microsoft, like we have AWS and GCP. Now let's talk about the Azure architecture components. Now, what are the components do we have under Azure? And one of them, first, let's discuss that how to access Azure. Now let's say you are a new user, you want to create an account, or you are an existing user, you want to handle that account or configure that account. So what are the ways that you could access or handle your account or create your account? So first of them, or one of them, and mostly we will be using this, maximum हम इसी को use करेंगे, which is Azure portal. And when I say we will be using that, I mean by training. Actual environment में portal बहुत ज़्यादा use नहीं होता है. I'll show it to you guys क्या होता है वहाँ पर भी use. But when I say portal, so we will look for Azure portal. This is the one we are talking about. And I'm trying to log in. So this is the website we have, https azure.microsoft.com. If I click here, this is what you see. This is the page you will see. Here, if you do not have any account, you can create your account. You can sign up. You can start here. You want a free account for practice. All of you are eligible. Nowadays, it is asking for PAN card, I guess. तो एक बार एक ही अकाउंट मिलता है आप लोगों को फ्री के लिए. So you could get one free account by clicking here. That you could get a free account by clicking here. If you click here, it will ask for some information and your credit card, and it will charge you 2 rupees on your credit card, but you will get a free balance of 200 US dollars. That is approximately 14,000 rupees, Indian rupees, and that you will get for 30 days. You will the maximum validity of those 13,000, 14,000 rupees is 30 days. In these 30 days, you will have to practice, and otherwise these 13,000 rupees will be lapsed. Okay, popular services are free for 12 months. We will see which are those popular services. 40 plus other services are free always. कुछ services है जो हमेशा free होगी. We'll see them also. Okay, कौन सी services free है? See, like virtual machine, it is free for 12 months. यहाँ पर दिया हुआ है भी के आपका क्रेडिट और एक महीना खत्म होने के बाद भी कौन सी मशीन्स आप चला सकते हो. ठीक है, जैसे ये है ऐप सर्विस, इट इज ऑलवेज फ्री. फंक्शन ऐप, it is always free. So details are given here, and we have already checked के services क्या होते हैं. Now we'll check in one by one जितने भी हमारी काम की सर्विस है, we will check them कि इस सर्विस का क्या मतलब है. But this is how you can sign up. You can start free here. यहाँ पर आप अपना फ्री वाला अकाउंट ये कर सकते हो. Let's say you are a small organization, but you are an organization and you do not want to take free. ये free जो है mostly students के लिए है, but organization भी use कर लेते हैं. Students as in हम लोग जो सीख रहे हैं उनके लिए है. पे एज यू गो में क्या होगा, यहाँ पर मुझको अपना कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा. पे एज यू गो में भी सेम, मैं अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करूंगा, ये सब करूंगा, एंड देन आई विल बी चार्ज्ड ऑन मंथली बेसिस ऑन माय कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड. This you can do with your normal credit card also. You will have to log in here with complete information. आपकी कंपनी का नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह वो सब फिल करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, and then you will get start charging. They will start charging you on monthly basis. So is it clear? Start for free क्या है, and then pay as you go ये क्या है? Is it clear as of now?
Yes. Okay, and there is a third one which is EA, Enterprise Agreement. Enterprise Agreement होता है जहां पर बहुत जायंट कंपनीज हो जो हर महीने की बिलिंग में नहीं ये करना चाहते और फ्री तो ऑब्वियसली नहीं यूज करना चाहते, दे आर रेडी टू पे, देयर दे यूज एंटरप्राइज एग्रीमेंट। वहां पर देन ये सब ऑफलाइन होता है, वो लोग कुछ आएगी एक एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं कि भाई साल भर, जैसे लीज्ड लाइन होता है आपका कि आप आईएसपी को साल भर के 1.5 लाख रुपए दे रहे हो और आपको एक डेडिकेटेड स्पीड दे रहा है, उस तरह का कुछ यू कैन यूज इन एंटरप्राइज एग्रीमेंट। सो अगेन आई विल गो टू पोर्टल बताने के लिए कि फ्रॉम वेयर यू कैन लॉग इन वगैरह कहाँ से कर सकते हो। ये अज्योर की वेबसाइट है, यहाँ से आप ट्राई अज्योर फॉर फ्री कर सकते हो, यहाँ से भी ये एक ही जगह ले जाएगा, फ्री फ्री 200 रुपीज का क्रेडिट मिल रहा है, 30 दिन की उसकी वैलिडिटी होती है। बट टू लॉग इन यू विल हैव टू गो टू पोर्टल, अज्योर का जो पोर्टल है वहां पे आपको लॉग इन का ऑप्शन मिल जाएगा। So this is the sign in option, you click here। अब आई थिंक मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, यूजर आईडी पासवर्ड सेव होगा तो आई थिंक ये ले जाएगा ऑलरेडी इस पे। लेट मी ट्राई टू लॉग ऑफ एंड लॉग इन अगेन। आई विल साइन आउट। Sorry guys, it was stuck. Okay, it has been signed out. I'll again go to the login page. This is first way we are discussing. In document, what can we see here? That we have several ways to connect to our Azure portal or to access our Azure account. तो ये अभी फिलहाल हम लोग Azure portal देख रहे हैं वेब ब्राउजर के थ्रू। ट्रेनिंग में मोस्टली हम इसी को करने वाले हैं और एक्चुअल एनवायरनमेंट में जो है कैसे यूज होता है दैट विल कम टू दैट। सो आई क्लिक ऑन साइन इन। This is the account I will be following, personal account है ये मेरा। Here it asks for a password, मैंने एक notification send वाला use कर रखा है, otherwise it will ask for a password here। So you simply go and approve your login request or you type in your password there and you click on yes, and this is what you see as your web page। Not exactly because this page I have been using तो इसमें काफी customizations है, but something like this, ऐसा कुछ दिखेगा आप लोगों को। और if you want we could create an account for one of you and we could try that, हम वो भी करके देख लेंगे। but this is called portal, this is called web portal, ठीक है। so this is we are handling Azure using web portal। is it clear till here now guys? Yes, sir. Yes. Yeah. Yes, sir. Okay, now next is Azure PowerShell, and this is operating system PowerShell they are talking about। Azure में login करने के बाद भी एक PowerShell है, यहाँ पर see if I click here, I hope you understand what is PowerShell। by the way, who do we have anyone who doesn't understand what is PowerShell? They can either tell me here or they could message me. Anyone who doesn't understand what is PowerShell is? I don't know. Okay, who else? Is anyone who doesn't understand anything, if any jargon which I'm using for the first time like PowerShell? See it okay, I got one more message। So for me I have been using it, तो मुझको ऐसा लगा कि यार नॉर्मल चीज तो बता दी मैंने, but maybe you did not understand, so do not hesitate or do not शायद just ping me or tell me that what is this, though it is basic but we don't understand, so let us know। so before we go ahead, let me quickly explain what is PowerShell। it's a very simple thing, you will understand it very quickly। PowerShell is nothing, just a method to handle your operating system, like we have now forget Azure for some time। let's say I have my operating system here, and here I want to create a new file or a new folder, or maybe on my window I want to do something, change wallpaper or change my computer name, anything जो भी मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, I want to do that। so there are methods। simplest thing, I want to open notepad, what will I do? The first option, now I'm not talking about Azure, I'm talking about Microsoft Windows।
I can click here and I can click here, and then I will have my notepad window open. So this is first method, or this is there is no first or second, actually this is one method, one of the methods I could use. I could open notepad. Now I want to open MS Paint. I can go here, I can open Paint here, I could do this, or I can type here. Okay, so these are the methods to open some application. Now what is the next method? We have one more method for that, which is a command prompt. I hope you understand command prompt. Anyone know, anyone who doesn't understand command prompt? Same things I could do from here. ये जो notepad वगैरह मैंने वहां से open किए थे, I'll simply have to type here notepad. I'll have to type MS Paint. Now what is the benefit? ये MS Paint और notepad बहुत छोटी चीज है जो आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिख गई, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि यार नोटपैड से यहाँ से GUI से करने में और कमांड प्रॉम्प्ट से करने में क्या डिफरेंस है, ठीक है? बट लेट मी गिव यू वन कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नाउ. एनीवन कुड, फर्स्ट थिंग, एनीवन डजंट नो कमांड प्रॉम्प्ट? कोई है जिसको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं पता है? Yes, anyone guys? I'll lower the hand because I checked with Riaz, he doesn't have any question, so I'm lowering that hand. Okay, so I am presuming that all of you know command prompt. Now, still let me quickly explain it. What is a command prompt? Command prompt is a CLI. CLI का मतलब ये होता है, जैसे एक हमारे पास है GUI. GUI is graphic user interface, जहाँ पे graphics होगा, where I can click, I can see something. That is graphic user interface, which is GUI. CLI is command line interface. ये जो है हम लोग कमांड से चीजें ओपन कर रहे हैं यहाँ पर. That is what a command line interface is. ठीक है, so this is the difference between GUI and CLI. तो जो भी CLI में आ रहा है ये कमांड प्रॉम्प्ट CLI का हिस्सा है. तो now let me give you one task. Who could tell me that how can I check my IP address? मेरे current system का IP address क्या है? How can I check that? Type ipconfig. Okay, that is through command, without command, using GUI. I just want to make show you the difference के task कितने easy हो जाते हैं command line से. Who could tell me how to check IP address? I can extend my display if you want. So let me extend the display. Can you guys see my display? No. Okay. No. I think sharing has been. I hope you can see it now, right? Yes. So I just extended this window so you can see these options here. Now, could any one of you tell me how to check IP address? Are you on Google Chrome? Okay. Okay. That's fine. I want to check my computer's IP address. Who could The tell me? notification area. Sorry. The notification area. Okay. Now, where do I go in notification area? There you can have the network properties. Network properties. Where do I find network properties here? Who's answering, by the way? Yes, okay, bhai, you're going right. But where do I find it? Yeah, you can see the Wi-Fi option connected over there. Right. So Yeah. okay, right click, fine. ठीक है, हमको इसमें ज्यादा ग्रिलिंग नहीं करना है वैसे भी किसी का. So to get an IP address, see, I had to click there. I had to click on networking option, वो Wi-Fi वाले आइकन पे क्लिक करना था, and still I haven't got my IP address. ठीक है. प्लस ये Windows 11 है, इसमें तो कुछ चीजें और चेंज हो गई है. And then I have my Ethernet here. And somewhere here I should see it, and yeah, here it is. Yes, Akib bhai, do you know where to go? इसके बाद कहाँ पर जाना है? From where to get IP address?
Network and internet. Sorry. Network and Yeah, internet. network and internet. Fine. I'm here. Windows 11. तो ठीक है, यहाँ पर कहीं पर मिलता है वो, यहाँ पर आप लोगों को आईपी एड्रेस मिलता है. यू विल हैव टू क्लिक, यहाँ पर कोई राइट क्लिक वगैरह होता है एंड देन यू विल गेट योर आईपी एड्रेस, बट दिस इज थ्रू GUI. एंड नाउ सेम थिंग, लेट मी हेल्प यू विथ CLI, जो कमांड प्रॉम्प्ट से होता है. टू गेट आईपी एड्रेस, इसकी भी जरूरत नहीं सर. आईपी कॉन्फिग वन कमांड, और यहाँ पर आपके एटलीस्ट 4 क्लिक्स थे और उसमें भी हम लोगों को अब तक मिला नहीं है. विल हैव टू सर्च के वो कहाँ पर आता है. ठीक है, आई कैन शो इट टू यू गाइस, वो दिखता कहाँ पर है, उसमें कहाँ पर दिखेगा वो भी मैं बता देता हूँ. सो हियर यू गो, यहाँ पर आना पड़ता है आपको कंट्रोल पैनल में, नेटवर्क कनेक्शंस में, एंड देन जिसका भी आईपी एड्रेस चाहिए आपको. फिलहाल मैं इस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, सो आई विल गो टू प्रॉपर्टीज. I come here and here I can see my IP address if it is static. ठीक है, प्रॉपर्टीज में आकर मुझको यहाँ पर मेरा IP एड्रेस दिखता है यहाँ पर. तो हाउ मेनी क्लिक्स आई हैव टू डू, 1 2 3, यहाँ से कर रहा हूँ तो 4, एट मिनिमम 4 क्लिक्स आई हैड टू डू. ऑन द अदर हैंड, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट और CLI, on the other hand using CLI, I just had to type one single command and here I get my IP address. So this is the difference between GUI and CLI. GUI is graphic user interface, CLI is command line interface. Okay, so this is command prompt. It is a part of CLI. Now we were talking about PowerShell. Is it clear? यहाँ तक clear है सब लोगों के लिए कि difference क्या है GUI और उसमें? And everything, Yes. I mean, no matter कितना complex task है, whatever you can do from here, जितनी भी चीजें आप लोग यहाँ से कर सकते हो ना, चाहे वो एक MS पेंट ओपन करना भी क्यों ना हो, या एक नोटपैड ओपन करना है, या फिर आईपी एड्रेस देखना है, आईपी एड्रेस चेंज करना है, whatever it is, everything you can do from command prompt, everything. उसके से कमांड ज्यादा बड़े हो गए, कुछ छोटे हो गए, कुछ सिंटेक्स अलग होगा. ओपनिंग ब्राउजर, क्लोजिंग ब्राउजर, शट डाउन योर कंप्यूटर, लॉग ऑफ योर कंप्यूटर, लॉग इन टू योर कंप्यूटर, एवरीथिंग. वंस यू हैव एक्सेस टू दिस, जो भी आप यहाँ से कर सकते हो. आपका कंप्यूटर का नाम, हियर इफ आई हैव टू चेक माय कंप्यूटर नेम, आई विल हैव टू गो टू माय कंप्यूटर और वहां पर कहीं पर मुझको अपना कंप्यूटर का नाम दिखेगा. ठीक है, but using command prompt I will just have to type one single command named host name. The moment I type host name, I will see my computer name. See, I just have to type host name and this is my computer's name. And if I had to do this using GUI, first I will have to find my computer. वो कहाँ पर है, this PC या computer, ऐसा कोई आइकन होता है उसका. पहले my computer होता था, Windows 10 वगैरह में this PC कर दिया, and then they keep on changing. Here it is, this PC. I'll have to click on properties. You see कितना टाइम ले रहा है, दो I have 8 GB RAM, सब कुछ अच्छा चल रहा है, still GUI कितना टाइम ले रहा है. And here I can see my device name. If I want to rename this, I could do it from here. So इतने सारे ये मुझको करने पड़ रहे हैं. ठीक है. On the other hand, if I use command prompt, I could simply type a command here using host name and I can see my कंप्यूटर नेम. इसके आगे चेंज करना है तो एक दो कमांड है, उसमें मैं सिंपली अपने कंप्यूटर का नाम चेंज कर सकता हूँ. सो आर यू गेटिंग द डिफरेंस? विंडोज वर्जन मुझको देखना है, यहाँ पर आके आई विल कम हियर एंड सी, ये ओके ये वाला वर्जन है, विंडोज 11 प्रो है. कमांड प्रॉम्प्ट में देखना, आई विल जस्ट हैव टू टाइप वन सिंगल कमांड, विन वर्जन. हियर आई विल सी द सेम इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जो दिख रही है सेम इंफॉर्मेशन मुझको यहाँ पर मिल रही है, बट इट इज जस्ट विथ वन कमांड और यहाँ पर मल्टीपल क्लिक्स. सो आर यू गाइस गेटिंग द डिफरेंस? डिफरेंस समझ में आया आप लोगों के? एक Yes. GUI और CLI में क्या डिफरेंस है? सो दिस इज कमांड प्रॉम्प्ट. अब कमांड प्रॉम्प्ट जो है विंडोज XP में आता था, विस्टा में आता था, 7 में आता था, बट कमांड प्रॉम्प्ट का एक एनहांस्ड वर्जन, इसमें थोड़े से लिमिटेशंस थे, थोड़ी चीजें आप कम कर सकते थे, थोड़ी चीजें काफी घुमा फिरा के करनी पड़ती थी. इसका ही एक एडवांस्ड वर्जन है PowerShell. सो दिस इज व्हाट अ PowerShell इज. सेम चीजें इसमें भी चलेगी. इफ यू वांट टू सी होस्ट नेम, it will work here. Windows version, it will work here. IP config, it will work here. और कौन से कमांड देखे हम लोगों ने? MS Paint, it will work here. I want to open Notepad, it will work here.
तो जितने भी कमांड्स वहां पर चल रहे हैं इस कमांड प्रॉम्प्ट में, ये सारे के सारे नोटपैड में चलेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस हो गए मे बी छोटे से, बट बियॉन्ड दिस ऑल्सो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें जो है वो भी पावरशेल के थ्रू चलेगी। बट अल्टीमेटली अगेन पावरशेल क्या है देन? इफ दिस इज GUI देन व्हाट इज पावरशेल? पावरशेल कौन सा मॉडल है? Which two models did we discuss? One is GUI, CLI. right, CLI. and there is one CLI, right? So PowerShell, it is a CLI model. I am duplicate screen कर रखी है मैंने. I will go to extended screen sharing बंद होगी maybe, and I'll share it again if it stops. Can you guys see the screen? Second screen I have shared. Yeah. Right, you can see the screen. If it finishes in 10 minutes, we'll start without any break. So I hope till now it is clear कि PowerShell क्या है. So again, going back to Azure, we were talking about Azure कि Azure को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. So there is one option is you log in, you go to portal azure.portal.com and वहाँ पे you go, you type in your login ID, you type in your password, and then you will have this portal. This is the portal you can use. The second option is you could use PowerShell. PowerShell कौन सा वाला? ऑपरेटिंग सिस्टम का PowerShell. स्पेसिफिकली क्यों ऐसे अलग से लिखा है, आई विल शो इट टू यू कि OS PowerShell अलग से क्यों लिखा है. So this is my operating system PowerShell. Why this is my operating system PowerShell? क्योंकि ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम से मैंने इसको क्लिक किया है. तो एक दूसरा PowerShell भी होगा मतलब कुछ Azure के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली OS PowerShell लिखा है. So when I come to this PowerShell, ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का PowerShell है. I'll just have to type here AZ login, Azure login, and then again it will take me to this page. I'll have to click here. यहाँ तक इतना ही काम करेगा. It has logged into you successfully. You could close the window, and after that if I see here I am connected to my Azure device now. I am connected to my Azure account. अब जो भी चीज हम पोर्टल पे कर सकते हैं सेम चीज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं. We will see that कि हम पोर्टल पे क्या क्या करने वाले हैं, सेम चीज हम यहाँ से भी करके देखेंगे. But is it clear now you guys see? ये मैं अपने Azure account से connected हो गया, Azure Cloud account से. If I know a few commands like create a resource group named name test resource group, ऐसे कुछ ये करूंगा मैं तो बन जाएगा वो जो exact syntax जब भी हम यूज करेंगे. Same thing I could do from here. Don't worry now if you don't understand what is a resource group वगैरह क्या है, वो हम लोग करने वाले हैं. As of now we are just focusing on this sentence, that how can we access Azure portal. So is it clear? Two ways we discussed. One is Azure portal which is directly on the web browser, हम जाते हैं और ये करते हैं. Second is PowerShell, my operating system PowerShell, ये मैंने अपने operating system पे एक किया और यहाँ पर login किया. So this is the PowerShell. Third is Azure CLI. Azure CLI का क्या मतलब होता है? ये Azure के अंदर एक PowerShell होगा, जिससे हम लोगों ने यहाँ पर Azure portal पे login कर लिया. So if I click here, यहाँ पर भी एक PowerShell का विंडो ओपन हो जाएगा. What is the difference between this PowerShell और जो मेरे पास PowerShell है उसमें? इस PowerShell पे आने के लिए पहले मुझको Azure के वेब ब्राउजर पे लॉगिन करना होगा, एंड देन आई कैन कम हियर, और उसके बाद मैं कोई भी कमांड चला सकता हूँ. और विंडोज वाले PowerShell पे आई कैन डायरेक्टली गो टू PowerShell और PowerShell से ही मैं लॉगिन कर रहा हूँ. यहाँ पर मतलब मुझको एक क्रोम की जरूरत ही नहीं है, क्रोम की या कोई भी ब्राउजर की. इफ आई एम डूइंग इट फ्रॉम दिस वन, यहाँ कोई ब्राउजर की जरूरत ही नहीं है अदर देन लॉगिन. और यहाँ पर मुझको पहले एक ब्राउजर की जरूरत है, पोर्टल पे लॉगिन कर रहा हूँ, एंड देन आई एम ओपनिंग PowerShell यहाँ से, और यहाँ पर मैं देन PowerShell यूज कर सकता हूँ. सो इज इट क्लियर? Yes, Anu. Yes. With PowerShell we have one more language here called Bash. Same thing I could do with Bash. अब ये अलग अलग क्यों है? हर लैंग्वेज का अपना एक स्कोप है, हर लैंग्वेज की अपनी लिमिटेशन है, हर लैंग्वेज का अपना कोई बेनिफिट है, हर लैंग्वेज का कोई ये है. बट अल्टीमेटली व्हाट आर वी टारगेटिंग और व्हाट आर वी एक्सेसिंग? चाहे मैं यहाँ से कर रहा हूँ, चाहे मैं बैश से कर रहा हूँ, और आई एम डूइंग इट फ्रॉम PowerShell, मैं कहीं से भी कर रहा हूँ, रिसोर्सेज हमेशा मेरे सारे इस यहीं पर बनने वाले. ये जो मेरा Azure पोर्टल है, दिस इज माई अल्टीमेट एम, यहीं पर मैं सारे रिसोर्सेज बनाने वाला हूँ. इज इट क्लियर? और आई डू इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर. यहाँ पर आके भी मैं डायरेक्टली करता हूँ,
तब भी रिसोर्सेज यहीं पर बनने वाले हैं। मैं कहीं से भी एक्सेस करके लॉग इन कर रहा हूँ, रिसोर्सेज मेरे सब कुछ यहीं पर बनने वाले हैं। इज इट क्लियर गाइस? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes? How you open the Yes. batch? ये यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। लेट मी क्लोज दिस। PowerShell. अज्योर पावरशेल पे, अज्योर पोर्टल पे आ गया मैं ब्राउजर से लॉगिन हाँ। करके। यहाँ पर लेट मी गेट दिस, In यार the PowerShell PowerShell आइकन। only you should. Yeah, yeah. After that you change in the PowerShell हाँ, yes, I'll show it to setting, you. right? Right. PowerShell setting में ही है वो। I'll show it to you. Uh-huh. So this is the icon from where you can access your PowerShell, right? जैसे ही इस पे क्लिक कर लिया आपने, यहाँ से आपका PowerShell ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको नीचे PowerShell दिखेगा। Okay. Yeah, got it. And then someone just inquiring about the class, so I replied to him on the group. This is your PowerShell, and at the upper left hand corner, PowerShell के नीचे Yeah, आपको yeah. लोगों को दिखेगा Bash. So be it PowerShell, be it Bash, be it command prompt, कुछ भी हो, ये आपको इतना ज्यादा डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं है, right? कि क्या है, कैसे है उसमें। Here we are just trying to learn what are the methods or what are the ways to control your Azure portal or your Azure account. So is it clear? यहाँ तक clear है? APIs Yeah. को हम बाद में देखते हैं कि APIs किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं। Is it clear guys? Yes. ठीक है। Yes, sir. Yes. Now next, Azure PowerShell and Azure CLI will connect to SDK, will connect to Azure Resource Manager. ठीक है, बैकग्राउंड में कैसे काम करता है इसको भी हम बाद में देखेंगे। So now we are clear how to access our Azure portal. Now what are the core services Azure provide? एक बार core services को देखते हैं and then we'll start कि Azure पे हमारा अकाउंट बनाना कैसे है, हम लोगों को क्या करना है, then we'll see that. ठीक है, let me see टाइम कितना पेंडिंग है। We have 3 minutes, so in these 3 minutes we'll discuss Azure की core services, और उसके बाद हम लोग जब will come back from this session, आज हम अकाउंट बनाना सीखते हैं। With me, anyone who wants to create their account, they could do it. ठीक है, so what are the core services provided by Azure? Services तो बहुत है, we saw it yesterday, right? Hello, How more than sorry, yes, sorry, Kumelia. yes, When are you creating a subscription? Are you doing it today or are you going to do it tomorrow? I think we will be able to create it today. अकाउंट बनाना तो मुश्किल से 10-15 मिनट का काम है, and then we'll see अच्छा, if we have क्योंकि मैं time. अभी शिफ्ट पे निकल रहा हूँ, पर Okay. अगर आज चलेगा, अपन एक प्रैक्टिकल कर लेंगे। I'll give you my credit card, वैसे भी करना ही था ना, इसलिए। So are you there in the what time do you No, have no, your shift? I'm leaving for my shift now. हाँ, 5 बजे का ना उधर शिफ्ट। Oh, okay. Okay. Let's see if we do that, we'll cover it again maybe. Let's see how Correct. much we covered till today. उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, and that's Okay. fine. We have plenty of students. हम multiple accounts बनाते ही रहेंगे, so we'll keep experiencing Okay. that. Okay. Okay, चलेगा। Okay. Okay. So guys, talking about Azure services, we have already seen कि कितनी सारी services है Azure के पास. We did that, and I also told you guys कि हम इसमें से सारी use नहीं करते हैं। मुश्किल से 10 सर्विसेज होगी जो हम यूज करते होंगे, जिसपे एक्सपर्ट्स होंगे, और 10 होगी जिसको यूज करेंगे। टोटल 20-25 सर्विस के आगे हम लोग नहीं जाएंगे। हम एज इन कोई भी नहीं, कोई एक टीम है, वो उस 20-25 सर्विसेज से लिमिटेड होता है, हम हमारी 20-25 सर्विसेज पे लिमिटेड होंगे। सो व्हाट आर द सर्विसेज? नाउ सर्विसेज वी हैव Azure एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। आइडेंटिटी इसका एक ये बोल सकते हो आप, बिग अम्ब्रेला है जिसके अंदर एक्सेस मैनेजमेंट ये सब आ रहा है, but you don't have to segregate that अगर नहीं समझ में आ रहा है। By reading this, if you understand, it's fine. If you don't, that is also fine. So important services कौन कौन सी है? आइडेंटिटी में क्या आता है? ये सब जो लॉगिन वगैरह, इफ यू रिमेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने एक्टिव डायरेक्टरी खोलकर बताया था आपको, दैट यू कुड लॉग इन योर यूजर फ्रॉम हियर, यू कुड क्रिएट यूजर, कोई नया न्यू ज्वाइनी आ रहा है, यू कैन डिलीट यूजर। डू यू रिमेंबर दैट गाइस? Yes. एक्टिव डायरेक्टरी वाला Yes, पोर्टल जो yes. बताया था, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट तो नहीं है एग्जैक्टली समझ लो, बट उसका एक्सटेंशन या उस तरह की सर्विस है आइडेंटिटी, कि अज्योर में कौन लॉगिन कर सकता है, नया यूजर, पासवर्ड्स वगैरह। गाइस, दिस इज अबाउट टू फिनिश, लेट मी स्टॉप इट एंड स्टार्ट द सेशन अगेन विद द सेम लिंक विदाउट एनी ब्रेक, अनलेस एनीवन वांट्स अ ब्रेक।
No, Solva, we'll join. Fine. So we'll start immediately. In just in case वो recording converting में लग जाता है, तो it takes 2-3 minutes. Otherwise, I'll start immediately. You guys can start joining using the same link.